Hello friends, this video on gravity class 11 chapter 8 part 1 is brought to you by Academics World, a new way of learning. So, what we will study today? Calipers law, factor that affect acceleration due to gravity, gravitation potential and potential energy, motion of satellites. So here we start our chapter. So before going ahead with the chapter, I'm going to tell you some interesting story. So listen it carefully. First, there are many theories proposed in the field of gravitation. कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत सारी थ्योरीज इंट्रोड्यूस हुई इन द फील्ड ऑफ ग्रेविटेशन. सो सबसे पहले आए ये भाई साहब पटोलमी. इनने कहा कि what the guy says that earth is at the center and sun revolve around the earth. हम जानते हैं कि ये जो थ्योरी इन्होंने दी थी पर गलत है. ये कह रहे थे कि अर्थ इज एट द सेंटर, अर्थ सेंटर में है और जो सन है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और इसका नाम दिया गया जियोसेंट्रिक थ्योरी. प्लीज नॉट जियोसेंट्रिक थ्योरी. सो ये तो हमें पता चला था ये गलत थ्योरी है. हाउ दिस गेट प्रूव्ड रॉन्ग? द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन we know Aryabhatta. He studied and from his enormous calculation, he calculated the years, summer days, etc. and all. He found that according to the Ptolemy concept, the calculation get wrong. So he tried to put the sun is at the center and earth may revolve around the sun. Then he found his calculation was right. So कहने का मतलब बहुत इजी है कि इनने क्या करा, सपोज कर लिया कि सन सेंटर में है और अर्थ रिवॉल्व अराउंड कर रहा है, तो इनकी कैलकुलेशन एकदम सही आई. तो इसी पे हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के. तो फिर आर्यभट्टा के बाद है कॉपरनिकस. कॉपरनिकस ने कहा ही स्टेटेड दैट नॉट ओनली अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन बट देयर आर मोर प्लैनेट्स और मूविंग बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. इनका कहने का मतलब था कि सिर्फ अर्थ ही नहीं बट और प्लैनेट्स भी हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. नाउ द टर्न कम्स फ्रॉम कैलिपर. चैप्टर हमें वैसे कैलिपर्स पे ही पढ़ने, कैलिपर्स लो एक्सेट्रा. तो हम पहले जानते हैं कैलिपर्स ने क्या करा. कैलिपर्स स्टार्ट स्टडिंग अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ कॉपरनिकस. कॉपरनिकस ने जो स्टेट करा था कि ये नॉट ओनली अर्थ बट ऑल अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. सो ही स्टार्टेड स्टडिंग द कॉपरनिकस कॉन्सेप्ट. नाउ आई एम गोइंग टू show you on my whiteboard session all the calipers law. So starting with the calipers first law. तो कैलिपर्स फर्स्ट लॉ कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ इलिप्टिकल पाथ. इलिप्टिकल पाथ मैं बताऊंगा क्या होता है, पर पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है. एंड द सन इज सिचुएटेड एट द फोकस ऑफ इलिप्टिकल पाथ. तो इलिप्टिकल पाथ ऐसा होता है कुछ, इसे हम इलिप्टिकल पाथ कहते हैं. तो कैलिपर फर्स्ट लॉ में स्टेट करा है उसने कि जो अर्थ है रिवॉल्व अराउंड एन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज सिचुएटेड एट द फोकस. दिस इज सन, दिस अर्थ. सो सपोज अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, ए पोजिशन एंड बी. So this is an elliptical path as given according to the definition. So हम प्रूफ करेंगे कि अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी और अगर रेडियस कम होगा तो स्पीड कम ज़्यादा होगी. So how can we prove it? See here. So अगर मान लीजिए अर्थ ए पोजीशन पे है और फिर रिवॉल्व करके बी पोजीशन पे जाती है अर्थ, तो हम कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी. एंगुलर मोमेंटम हम एल से डिनोट करेंगे. सो
एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर। सो देखा जाए तो हम इसकी वेलोसिटी तो बदल जाएगी, तो हम इसको v2 लेंगे, और r भी बदलेगा तो हम इसे r2 लेंगे, बट मास कैन नॉट बी चेंज, मास ऑफ अर्थ रिमेन सेम। एम v1, हम v1 ले लेते हैं इस पोजीशन पे, v1 एंड r2, मास गेट कैंसिल, v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2। तो इससे हमें स्टेट क्या होता है कि v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के। तो जैसा कि मैंने आपको स्टेट करा था, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो रेडियस छोटा होगा, अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। दैट्स द फर्स्ट लॉ। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द सेकेंड लॉ। So now started with the Calipers second law. It is also called as the area of law. So according to the second law, the area swept by a given planet will be same if the time period of the observation is same. तो स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है? स्टेटमेंट कह रही है कि अगर आप टाइम पीरियड सेम लेते हैं तो एरिया भी इक्वल होगा। सपोज अर्थ इज एज दिस पॉइंट एंड नाउ अर्थ रोटेट एट दिस पॉइंट इन वन डे। The area swept by the earth in one day will be equal to the area swept by earth at another day. Suppose the earth is now at position this and now revolving and get this, but the time period is also taken same. As we know, the velocity increase if the radius is less and velocity decrease when the radius is large. So हमारे पास एक इक्वेशन है, इससे साफ साफ पता चला एरिया वन इज इक्वल टू एरिया टू। नाउ हम देखते हैं कि डेल्टा एरिया अपॉन डेल्टा टी। सो ये क्या है? चेंज इन पर यूनिट टाइम कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। सो एंगुलर मोमेंटम मैंने पहले भी कहा था, इसे एंगुलर मोमेंटम लीजिएगा। तो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा? L/m मॉडुलस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ये बस इक्वेशन याद करने की चीज़ें, ज़्यादा यूज़ होता नहीं है इसका एग्ज़ाम में, तो जस्ट रिमेंबर इट। नाउ हमें जो मेन रिमेंबर करना है वो कैलिपर्स थर्ड लॉ पे है, तो प्लीज़ केयरफुली लिसन द थर्ड लॉ। सो हेयर वी स्टार्ट द थर्ड एंड द मेन कैलिपर्स लॉ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ पीरियड। It states that the square of the time period is proportional to the cube of radius of semi-major axis. तो इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझते हैं और प्रूफ करते हैं। Suppose this is an orbit of Earth and Sun is at the center and here is Earth. Suppose it is an circular path. So this is in radius, time period we will calculate. So we know that force is equal to gm m upon r square. So I am taking this m and this is capital M, this is small m. Please note. And forces, we also know that what is the formula of centripetal force? mv square by r. Here m is the mass of the earth. Equating this equation 1 and 2, we get r square is mv square upon r, get cancelling by we get is equal to v square. And now the question arises, v square is equal to what? V square is equal to, so first I am describing what v square, v 2 pi r upon t. 2 pi r is generally the circumference and time period as we have to calculate. So we are calculating and putting the value of v gm upon r 4 pi square r square upon t. This I will get from squaring of 2 pi r upon t and t square. Thus we will get gm upon 4 pi, sorry, I'm writing here, we will get 4 pi square upon gm r cube is equal to t square.
So T square is directly proportional to RQ. Please, I'm explaining you once again. We know that force is equal to GMM upon R square, where capital M and M is the mass of the sun and the earth. And force का फॉर्मूला एक और होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये स्मॉल m हमारा अर्थ का मास है, F इज इक्वल टू एम बी स्क्वेयर अपॉन आर जी एम एम अपॉन इक्वेटिंग दिस इक्वेशन, एंड वी गेट जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर. वी स्क्वेयर मैंने बताया सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम. तो हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट हमारी 2πr होगी और टाइम हमारा t हो गया, रख दिया हमने, उसको स्क्वायर कर दिया. वी विल गेट जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू 4π स्क्वेयर आर स्क्वेयर. आई एम राइटिंग हेयर अबव. Cross equation this, cross multiply is this, t square is equal to 4π square gm. And I'm giving you one tip. This value is 5.91 10 raised to the power minus 11, 4π square upon g. So here we stop our first part. Now for other videos you will watch second part. Thank you. Please like and subscribe our YouTube channel. Thanks once again.